हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएच टेक। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न। प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न क्या चीज़ है? प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं क्लोन। इंटेंट: prototype is a creational design pattern that lets you copy existing object without making your code dependent on their classes। ठीक है, तो ये क्या करता है? Let you copy existing code objects without making your code dependent on their classes। तो यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास एक फिगर है जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। अब जाते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में say you have an object and you want to create an exact copy of it. How would you do it? First you have to create a new object of the same class. Then you have to go through the fields of the original object and copy their values to the values over to new object। यहाँ तक तो ये सुनने में ठीक लग रहा है, बट देयर इज़ अ कैच। नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कैन बी कॉपीड that way because some of the objects fields may be private or not visible from the outside of the objects itself। ठीक है, यहाँ पे इशू होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, डू यू थिंक यू वोंट बी एबल टू कॉपी इट? 1 month later, परफेक्ट, तो हमने कॉपी बना ली है। कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड इजंट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, सो there is a problem with the direct approach since you have know the object class and create duplicate. Your code becomes dependent on that class. If the extra dependency does not scare you, there is another catch. Sometimes you only know the interface that the object follows but not its concrete classes जो कि इसको implement कर रही हैं। When, for example, a parameter in a method accept any object that follow the same interface। Solution इसमें क्या है? Solution ये है कि the prototype pattern delegates the cloning process to the actual object that are being cloned। The pattern declares a common interface for all the objects that supports cloning। This interface lets you clone an object without coupling your code to the class that the object usually। Such interface contains the single clone method। Okay. The implementation of the clone method is very similar to in all classes. The method creates an object current class and carries over all the field values of the old object into the new one। You can even copy the private fields because of the most of the programming languages let the objects access the private fields of the other objects that belong to the same class। An object that supports the cloning is called the prototype। When your object have dozens of the fields and the hundreds of the possible configuration, cloning them might have such an alternative to subclassing। ठीक है, like this: configure A, configure B, configure C। Okay, let's make some clones। तो इस तरह से ये क्या है, क्लोन्स बनाता जा रहा है। Here how it works, काम कैसे करता है? You can create the set of the objects configured in various ways when you need the object like the ones you have configured। You just clone the prototype instead of the constructing a new ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो हम स्क्रैच से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की जगह हम जो एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर लेते हैं,
क्लोन कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड एनालॉजी इसमें क्या है? इन रियल लाइफ प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टेस्ट बिफोर टेस्टिंग a mass production of the products. However, in this case, prototypes don't participate in any actual production, playing a passive role instead. तो इसकी क्या आ गई है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्लोनिंग है एक रियल वर्ल्ड में यूज़ होती है। सो जेएस टेक से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।